किसी भी इंसान के हवाले से कोई दिन मनाना इस्लामी रिवायत नहीं है। मतलब बर्थडे मनाना या बरसी मनाना या उन्हीं खास दिनों पर कोई सदका खैरात करना, ये सब चीजें बाद की पैदावार हैं। सहाबा कराम इन चीजों से बहुत आगे थे। उनकी जिंदगियों में ऐसी मसरूफियात नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने बड़े बड़े काम किए, दीन की बड़ी खिदमत की कि अलबिदातु तुमीतु सुन्ना, बिदत जो है वो सुन्नत को खत्म कर देती है, सुन्नत की मौत है। यानी कोई भी सुन्नत रवाज नहीं पा सकती अगर कहीं पर बिदत छाई हुई हो। As far as birthday is concerned, our beloved Prophet Muhammad said that there are only two festivals in Islam, two annual festivals. They are the Eidains, the Eid al-Fitr and Eid al-Adha. The first is after the Ramzan ends, that Eid al-Fitr, and the second is Eid al-Adha, that's we have the Eid of sacrifice. These two are the only Eids that are annual Eid is there, that is permissible to celebrate. And the Prophet also mentioned that the weekly Eid is on Friday. So there's one weekly Eid and two annual Eid. These are the celebration. So any celebration which is celebrated annually, every year, is against the teaching of Islam, except these two, the Eidain, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. That's the Eid al-Nahar, the Eid of sacrifice. Birthday is more of a Western culture and people celebrate it. It is not an Islamic culture and it is against the teachings of Islam. So therefore it is not permissible. Any celebration which is done on an annual basis, whether it be wedding anniversary, whether it be Valentine's Day, whether it be Mother's Day, or whether it be Teacher's Day, all these type of days or annual celebration, except for the two Eid, are not permissible in Islam. If you have a normal party for graduation, no problem. If you have a marriage and you have a party and a celebration for marriage, as long as nothing haram is done in that celebration, is permitted. So celebrating things which are good like marriage or graduation at one time, no problem. But making it an annual affair, you start saying, I will have wedding anniversary, so this is not permissible in Islam. This is the main basic ruling. There are other reasons why it's not permitted. Many of the things that is done on birthday, it is against the teaching of Islam. There are various other activities associated with birthday which may be haram. For example, today most of the birthday parties, they involve music, which is haram. They may involve dancing, which is haram. There may be obscenity, which is haram. So many activities involved are against the teachings of Quran and Sunnah. But the basic thing is celebrating itself is haram. Second reason is because activities may be haram. The question posed is that what if we do not have any haram activities and we have a birthday party and give an Islamic lecture? Is it permissible? Giving Islamic lecture is good. You can do it any time of the year, on any day of the year, but specifically selecting that I was born on this day, 19th of September, and I will have an Islamic lecture because I was born on this day, this again is not permissible. Having Islamic lecture any day is permissible, but having every year only on that one particular day, it is not permissible. Furthermore, many a times birthday celebrations involve celebration of spiritual leaders, of messengers, like Jesus Christ, peace be upon him. This leads to shirk. It may involve celebration of celebrities, of famous personalities. This leads to hero worship. All this is against the teaching of Islam. Regarding the last question, that is it permissible to wish someone happy birthday? When celebrating birthday itself is not permissible, so where is the question of wishing someone happy birthday? Normally, when a person is born on a particular day, the lifespan of every human being has already been determined by Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, when a birthday comes, he is going to live for 1 year less.
So is it a point to celebrate or is it a point to mourn? So there is no concept, it is illogical that you're wishing someone a happy birthday because he has become 20 years old or 30 years old. In fact, he is going closer to his grave. Irrespective whether he is going closer to the grave or not, celebrating birthday per se is not permitted in Islam. विश करेंगे तो विश करने का भी कोई दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है. विश करने की कोई दलील सहाबा से साबित नहीं थी. अगर होता विश करना तो सहाबा जरूर अपने नबी से इतनी वालहाना, जिसको बोलते बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते, अपने नबी को जरूर ग्रीट करते उनकी सालगिरह पर. क्या है नबी आप पे जो है आपकी मिलाद आपको आज मुबारक हो, जैसा आज मुसलमान कर रहे मिलाद मुबारकबाद पेश कर रहे अपने नबी को, जो कि सहाबा ने कभी पेश नहीं किया. अच्छा अगर ठीक है नबी को नहीं किया लेकिन सहाबा आपस में कर दे, सहाबा ताबईन सहाबा को कर दे, ताबईन को करते, सलफ सालीन एक दूसरे को करते, हमें चूंकि नहीं मिलता तो ग्रीट करना भी दुरुस्त नहीं. और ग्रीट करना तो वजह बनेगी फिर लोगों की पार्टीज बनाने की. आपने ग्रीट किया, आपने याद दिलाया तो चलिए साथ मिलकर खाना खाने में. जब ग्रीट करने में हर्ज नहीं तो खाने में हर्ज नहीं है, गिफ्ट देने में हर्ज नहीं है तो गिफ्ट लेने में हर्ज नहीं. मतलब आपकी सालगिरह पे आप मुझे दीजिए मैं आपको देता हूँ, फिर ग्रीट कर रहे हैं. अब बचा क्या सिर्फ खाना, तो खाने को बिदअत करार दे क्या फायदा फिर, कि तो खाना तो वैसे भी ये सालगिरह में जो हो रहा है वो खाना तो हलाल ही रहता है, उस पर कुछ पड़ा थोड़ी जाता है. मसला तो यही है ना कि आपने विश किया फिर आप मना रहे हैं, एक एक्ट शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ना विश करना अलाउड होगा ना उसको मनाना दुरुस्त है. ठीक है दुरुस्त नहीं. हाँ ये अलग बात है कि हम एक दूसरे को ये याद दहानी कर सकते हैं कि देखो एक साल ज़िंदगी का चला गया. बच्चों को आप बोल सकते बेटा एक साल ज़िंदगी का आपके चला गया, अब आप बड़े हो रहे हो, आप बालिग होने की तरफ हो, आपको नमाज़ें शुरू करना है. आप ये याद दहानी तो हो सकती है, एक माइलस्टोन जैसा होता है ना, कोई एक काम की डेट 15 डेज में करो, 1 मंथ में करो, 1 ईयर में करो. तो एक ये तो हो सकता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ चली गई तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने क्या किया इतनी उम्र में, एक तरह से ज़ाया हो रही. मेरे बड़े मुझे याद दिला सकते कि अब तुम इतने साल के हो गए बेटा. बच्चों को आप याद, लेकिन विश करना कि हैप्पी बर्थडे, फिर मसला तो यही शुरू होना कि हैप्पी बर्थडे जब आपकी होंगी तो हैप्पी बर्थडे नबी की क्यों नहीं बोल सकता कोई. मिलाद मनाना तो और अफजल है, जब आप आपस में ग्रीट करें तो मिलाद मनाएंगे. कल मिलाद नहीं मनाएंगे, फिर अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मनाएंगे, फिर चारों इमाम की, फिर खुलफा राशिदीन की, और बस फिर एक सिलसिला बिदअत और खुराफात का शुरू हो जाएगा. फिर जुमा की और फिर ये और दिन की और रात की और सुबह की और शाम की. लिहाजा ना आप ग्रीट करें ना आप गिफ्ट करें, ये दोनों भी दुरुस्त नहीं. अगर दुरुस्त होता तो सहाबा से इनसे इसका कुछ ना कुछ अमल साबित होता. हाँ आप एक साल गया बोल के बच्चों को नसीहत और वाज करने के लिए याद दहानी करा सकते कि बेटा एक साल आज ख़त्म हो गया आपकी ज़िंदगी का फना. ये एक अलग चीज़ है कि याद दहानी रिमेम्बरेंस की बात. साल जब पैदा हो से याद रहता है इंसान कितनी उम्र हो रही है उसकी, अल्लाह के मतलब वो जन्नत या जहन्नुम की तरफ बढ़ रहा है हर साल, कितना नज़दीक है वो किस चीज़. एक तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्रीट करना मैं कहूँगा एहतियात करे इस मामले में. बहरहाल ये ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त है. अगर दुरुस्त होता तो सलफ़ सालिहीन से कुछ ना कुछ बातें साबित होती. बेवकूफ़ाना और अहमकाना एक रस्म है. बल्कि जो लोग मज़हब मुखालिफ हैं उनमें भी बहुत से बर्थडे को नहीं मानते, कहते हैं ये टोपी ड्रामा पता नहीं फजूल सी क्या चीज़ निकाली हुई है लोगों ने. तो ये बिल्कुल अकल के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसमें विश ना किया करें आप. हिश किया करें. हिश जो भी कह रहे हैं मुझे विश करो, हिश निकलो यहाँ से, फजूल काम और कोई काम करो. शादी करो तो अब मुबारकबाद दूंगा, आपकी औलाद हो गई, आपकी तरक्की हो गई, इंक्रीमेंट लग गया आपके, या आपकी कोई और अच्छी जॉब मिल गई तो मैं विश करूंगा आपको. ये क्या इस दिन आप पैदा हुए थे तो वही वाला दिन आ गया है, तो क्या हो गया भाई वही दिन आ गया है, तो आप तो कब्र के 1 साल करीब हो गए, आपकी ज़िंदगी में 1 साल कम हो गया, तो विश नहीं आप अफसोस करें. तो जब भी कोई कहना कि जी आज मेरी बर्थडे, आप कहें यार जितनी ज़िंदगी आप लेकर आए थे मुझे बहुत अफसोस हुआ, अब उसमें 1 साल मज़ीद कम हो गया, अब थोड़े ही दिन रह गए मेरे भी और आपके भी, तो मुझे तो मुबारकबाद देने का दिल नहीं चाह रहा, बस अब हमें थोड़ा आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए. इस तरह की बातें करें. लोग नाराज़ हो जाते हैं तो भाई नाराज़ी की तलाफ़ी इस तरह से करें कि आप बर्थडे वाले दिन जाके उनको कह दें यार मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है लेकिन यार ये विश करना मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे ये अजीब सी रस्म लगती है. बहरहाल आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह करे आप अगले साल तक मज़ीद ज़िंदा रहें. इस तरह की कोई घुमा फिरा के यानी कुछ टोपी करा दिया करें उसको. आस्क मुफ्ती तारिक मसूद. अगर तो सालगिरह बर्थडे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई है, आपकी उम्र कितनी थी, कितनी मरतबा जिंदगी में मौका आया होगा मनाई. अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, 2 साल हुकूमत की, कितनी मरतबा मौका आया होगा, 2 मरतबा तो आया ना, मनाई उन्होंने. उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने साल हुकूमत की, 10 साल, कितनी मरतबा मौका आया, क्या उन्होंने ऐसा किया. उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल के करीब उन्होंने हुकूमत की तो 12 मरतबा तो मौका आया, लेकिन ऐसा किया उन्होंने. अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
جو داماد ہیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خامد ہے، 4 سال حکومت کی، کچھ دن کم 4 مرتبہ موقع آیا، ایسا کیا؟ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ نیکی نہیں بن سکتی، اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش نہیں کیا اس کو کرنے والا کبھی بھی اللہ کا تقرب نہیں لے سکتا۔